Hello everyone, welcome back to our lecture series of ring theory. We have discussed first, second and third theorem of isomorphism for the rings, and based on these important statements we have discussed plenty of significant statements and their proofs, and also we discussed some examples and the constructions of prime ideals and maximal ideals. इस सभी कंस्ट्रक्शन में हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि किस तरीके से किसी फील्ड में अगर फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक जीरो है तो उसमें एक ऐसा सब फील्ड मिलता है विच इज आइसोमॉर्फिक टू दी फील्ड ऑफ रैशनल नंबर। और अगर किसी फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक कोई पॉजिटिव नंबर n है तो हमेशा हमें एक z n के आइसोमॉर्फिक सब फील्ड मिलता है। इस कंस्ट्रक्शन में जब हमने इस कॉरोलरी का प्रूफ लिखा था तब हमने देखा था वी वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम दी दिस थिंग दैट z इज द इंटीग्रल डोमेन और ये आइसोमॉर्फिक था एक सेट s के। ओके, now using this set S, we constructed a set T that was of the form AB inverse, where both A and B are coming from the set S. Of course, this B is not equals to 0. And then we have proved that this T is isomorphic to Q. Now look at this construction. हमने Z से S, Z is isomorphic to this S and S के help से we have constructed this T, जहां पर ये T उस फील्ड F का एक सब फील्ड था विच इज आइसोमॉर्फिक टू Q। ये केस तब है जब कैरेक्टरिस्टिक जीरो है। बट लुक एट दिस कंस्ट्रक्शन, जब भी हमारे पास इस तरीके के इंटीग्रल डोमेन्स हैं वी कैन कंस्ट्रक्ट दिस काइंड ऑफ फील्ड्स, राइट। अगर मोर प्रिसाइजली हम हमारे वेल नोन स्ट्रक्चर की बात करें तो जब कभी भी हमारे पास अ पेयर ऑफ इंटीजर है, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास a कोमा b, ये दो इंटीजर है, तो इन इंटीजर्स की हेल्प से वी कैन कंस्ट्रक्ट दिस काइंड ऑफ नंबर्स और इन्हीं नंबर्स को हमने बोला है रेशनल नंबर्स। ओके, वेयर दिस b इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो इसका मतलब क्या है, जब कभी भी हमारे पास कोई एक इंटीग्रल डोमेन है तो उस इंटीग्रल डोमेन के एट ए टाइम दो एलिमेंट्स की हेल्प से एट ए टाइम दो एलिमेंट की हेल्प से वी कैन कंस्ट्रक्ट दीज काइंड ऑफ एलिमेंट्स। ओके, और ये जो एलिमेंट्स हैं वो किसी फील्ड के एलिमेंट बन रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो कंस्ट्रक्शन है दिस इज ड्यू टू दी हेल्प ऑफ क्वोशंट्स, तो इसी वजह से हम इस फील्ड Q को दी फील्ड ऑफ क्वोशंट्स बोलेंगे और क्वोशंट्स कहाँ से हैं, इंटीजर से। ओके, तो Z से हम रैशनल नंबर का सेट कैसे बनाते हैं ये कंस्ट्रक्शन हमारे दिमाग में होना चाहिए सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द फील्ड ऑफ क्वेश्चंस। सो द जनरल आइडिया इज व्हेनेवर वी हैव एन इंटीग्रल डोमेन तो उस इंटीग्रल डोमेन की हेल्प से वी कैन कंस्ट्रक्ट अ फील्ड और उसी फील्ड को हम द फील्ड ऑफ क्वेश्चंस बोलते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट दिस लेक्चर by writing a theorem, and that theorem itself define the field of quotients. Okay, so we are going to have a theorem. This is theorem 15.6. okay, and this is about the field of quotients. okay, तो Z से Q कैसे बनता है वो हमें अगर ध्यान में है तो वी कैन think of field of quotients. Okay, so let D be an integral domain then there exists a field F which we are going to call the field of quotients of D. Okay, quotients of D that contains a subring isomorphic to
आइसोमॉर्फिक टू डी। ओके, तो बेसिकली जब भी हमारे पास कोई एक इंटीग्रल डोमेन है तो उस इंटीग्रल डोमेन के क्वेश्चंस लेने से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस है, अगर हम उनसे एक सेट बनाएंगे तो वो सेट एक फील्ड होगा और उसी फील्ड को हम द फील्ड ऑफ क्वेश्चंस ऑफ डी बोलेंगे। ओके, इसके आगे की इंफॉर्मेशन क्या है कि जब भी हम डी इंटीग्रल डोमेन से कोई एक क्वेश्चन फील्ड एफ का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो इस फील्ड एफ में हमेशा हमें एक सबरिंग मिलेगी विच इज आइसोमॉर्फिक टू डी। ओके, तो इसके प्रूफ का एक स्ट्रक्चर कैसा रहेगा कि सबसे पहले हम एक इंटीग्रल डोमेन को कंसीडर करेंगे, उस इंटीग्रल डोमेन की हेल्प से हम इस एफ का कंस्ट्रक्शन करेंगे और फिर शो करेंगे कि ये एफ एक फील्ड है। इसको फील्ड शो करने के बाद वी विल look for the a mapping phi from D to F and will show that that's phi form a ring homomorphism, and precisely for some subset of F it becomes an isomorphism. Okay, so this is going to be the structure of this proof. Now let us start the proof. Proof is quite simple but constructive. So let again we are taking the set S that is equals to A comma B, where A and B are coming from the domain D and B is not equals to 0. तो हमने क्या कहा था कि हमारे दिमाग में ये स्ट्रक्चर होना चाहिए कि किस तरीके से हम Z से Q का कंस्ट्रक्शन करते हैं। ओके, तो एट ए टाइम वी टेक टू इंटीजर्स, तो हमने यहाँ पर दो डोमेन के पॉइंट्स ले लिए ए और बी, और हम एट ए टाइम इसी तरीके के एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे जहां पर दिस सेकंड एलिमेंट बी इज नॉट जीरो। ओके, अब हम ये कहेंगे कि ये जो भी सेट एस बन रहा है इसके सेट एस का हर एक एलिमेंट एक एफ के एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्ड्स है। ओके, सो लेट अस आइडेंटिफाई दिस वन, और इसको हम इक्विवेलेंस क्लासेस की हेल्प से एफ का कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। ओके, देन for this set S, okay, let S equals to this, then we define a relation on S as A comma B is related to C comma D if and only if this AD is equals to BD. This is the definition of relation. Okay, कोई भी दो एलिमेंट है A B और C D, वो कब रिलेटेड है जब AD इक्वल्स टू BC है। ओके, जब AD इक्वल्स टू BC है। ठीक है, तो ये हमने रिलेशन डिफाइन किया वेयर A, B and C, D are element of the set S. Right, now our first claim is to prove that this relation is an equivalence relation. Okay, so claim 1, that the relation, which one, this relation is an equivalence relation on the set S. Okay, so इसके लिए हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन है ऐसा शो करना है। तो फर्स्ट व्हाट वी कैन से दैट दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हमने ये शो करना है कि हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड हो। ओके, सो फॉर ईच A comma B in S we have that A comma B is related to A comma B as A B is equals to, we are taking A B equals to B A। ये क्यों कह पा रहे हैं, सिंस A B
ये सभी एलिमेंट है डी के, और डी एक कॉम्यूटेटिव रिंग है क्योंकि इंटीग्रल डोमेन है. ओके, so AB equals to B, and this is true for all AB belongs to S, and hence the relation becomes reflexive. Okay, now the second one is this relation is symmetric. Symmetric कैसे prove कर सकते हैं? Let us choose any two element. So let A comma B and C comma D are any element of S, and let A comma B is related to C comma D, and by the definition this is if and only if A D is equals to BC. Okay, एंड क्योंकि ए बी सी डी ये सभी डी डोमेन के एलिमेंट है, सो दिस कैन बी रिटन एज दिस इज इफ एंड ओनली इफ बी सी इज इक्वल्स टू ए डी, एंड दिस इज if and only if we can write this as CB is equals to DA. Okay, ये क्यों लिख पा रहे हैं? Since A, B, C, D all are element of D, and D is commutative ring. Okay, now by the definition हम इस वाली definition को क्या लिख सकते हैं? This is if and only if C comma D is related to A comma B. Okay, so we have that A comma B is related to C comma D, then C comma D is also related to A comma B. So this is the symmetricity. Now come to the transitivity. So this relation is transitive. Okay, so for this let us have that let A comma B, C comma D and E comma F belongs to S such that किसी भी relation को transitive prove करना is always simple. Okay, so such that A is related, A comma B is related to C comma D, and C comma D is related to E comma F. Okay, then we wanted to prove that A comma B is related to E comma F. Okay, now what is A B is related to C D, shows that A comma B is related to C comma D is if and only if AD is equals to BC, and CD is related to EF, and this is if and only if CF is equals to DE. Right, now इन सभी combination से we are saying obviously जब हम ये कह रहे हैं कि A B C D ये सभी एलिमेंट है, तो this B D F are not equal to 0, and A B C D E F ये सभी D के एलिमेंट्स है. Okay, now if you see A comma A F AD equals to BC from this one, so AD equals to BC, this is implying that ADF is equals to BCF. Okay, now on this BF देखिए ये जो मल्टीप्लीकेशन है वो इस तरीके से है. ओके, अब यहाँ पर हम एसोसिएटिविटी अप्लाई करेंगे. दिस इम्प्लाइज ADF is equals to BCF. Okay, and this is CF is equals to DE, so I'm just writing ADF is equals to BDE. Now this D is non-zero. Whenever this D is non-zero, then from the property of integral domain, what we can say, this implies that AF is equals to BE. and यहाँ से क्या relation है? This implies AB is related to
E, F. Okay, so these all are if and only if. Okay, so we have that whenever this A comma B is related to C comma D and C comma D related to E comma F, then A B is related to E F. Okay, ये वैसे प्रूफ में आप ना भी लिखे तब भी ठीक है, बट हाँ एक ब्रीफ सिचुएशन काइंड ऑफ अगर हम बात करें तो वहां पर आपको ये प्रूफ लिखना ही है. ओके, सो थर्स फ्रॉम 1 2 3 we can say that this relation is an equivalence relation on S. ओके, अब हमें ये पता है कि किसी भी सेट पर अगर हम इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं तो वहां से हम इक्विवेलेंस क्लासेस को जनरेट कर सकते हैं. ठीक है, सो इन इक्विवेलेंस क्लासेस का जो सेट है उसी को ही हम F लिखेंगे. ठीक है,